Hi friends, this is paper code PH3501, Unit 1, Solid State Physics by Dr. M.R. Gadhvi. In the previous lecture, we have seen something about this bonds and solids, and we try to understand what it is exactly. The bond, the chemical bond, can be understood by terminology of force or by the terminology of energy, and both the aspect we have seen in the previous lectures. Let us try to recollect the few things and then proceed for the topics. Solids are moderately strong and slightly elastic in nature. The individual atom must be held together by solids by interatomic forces, and this force we can term as a bond. However, the repulsive force in addition to attractive force that results to make the solids are incompressible. माने जो लास्ट टाइम हमने देखा कि दो atoms which are at an infinite distance, you force them to bring it to close to each other at a certain distance, that is r0, or at an equilibrium distance, they are ready to wish to form a bond. But that formation of the bond, if you take it a further decrement of the distance or try to decrease the distance lesser than their equilibrium position, then the repulsive force will be dominating, and that makes the solids are incompressible, right? So in nutshell, at the bond where the bond is formed, that is at r0, which is the most stable position, and this is the position which is not allowing the atom to move away from each other, and it is not allowing the atoms to move further closer of it, neither allowing away to each other nor allowing to closer to each other, and that is what the mean of the bonds. The bonding or the cohesive energy, bonding energy or the cohesive energy, defined as the energy of a formation of 1 kilomole. This is very important. अगर एग्ज़ाम के दिन ट्रिकी क्वेश्चन पूछे और अगर 1 किलोमोल ना लिखा हो तो रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट द कोहेसिव एनर्जी. Cohesive energy is the energy to hold a substance together, or the substance of a 1 kilomole holding a number of atoms together, or a required number of atoms in a 1 kilomole holding together. That energy is known as the bonding energy or the binding energy or cohesive energy. माने 1 किलोमोल सब्सटेंस बनाने के लिए जितने एटम से आयन चाहिए वो सबको होल्ड टुगेदर माने एक साथ रखने के लिए जो शक्ति जरूरी है, that energy is required. So I repeat again, the bonding or the cohesive energy defined as the energy formation of a 1 kilomole substance from its atoms and ions is called the cohesive energy. The same way you can understand by other way to remember it, that is the energy required to dissociate this atoms or ions which remain whole together, that is called the energy of a dissociation, or it is always the same amount of energy of a binding energy, but you have to apply it other way. So the best way to measure the bond strength is just by providing the breaking the bonds. Let us try to understand what you mean by the bonds and how we should remember the bonds and how the bonds will be categorized, etc., etc. So the understanding of the bond we have already taken. The few fundamentals category of the bonds you had learned in your 11th and 12th grade, maybe in FI as well, but just
try to understand that what it is. If you do remember, on basis of their strength, the bonds can be categorized the chemical bonds can be categorized in two parts, and the first part is referred as the primary bond and another one is referred as the secondary bond. As their name has given, the primary bond and the secondary bond, they are given the name as per their condition of formation and their strength. This suggests that the primary bonds will definitely more stronger compared to the secondary bond, and it is. If we go in a more detail of it, then the primary bond will be further categorized into the three varieties of the bonds. The first one is ionic bond, the second one is covalent bond, and the third position is the metallic bond. All the three bonds, ionic bond, covalent bonds, and the metallic bonds, are ordered in hierarchical such that their strength is accordingly. So in short, they are arranging a list of these primary bonds, ionic, covalent, and the metallic bond as per their strength. That means ionic bond is the strongest bond among the all chemical bonds. The second strongest bond is covalent bond. The third strongest bond is the metallic bond in category of a primary. As the name secondary is there, that means it is definitely weaker than all the primary bonds. In case of secondary bonds, we do have a two type of fundamentally. One is called hydrogen bond and second is called the van der Waals bond. And now we try to understand these all bonds in a detail. But before going to discuss the ionic bond in detail, I would like to remind you and request you that if you do have your 12th standard or 11th standard books with you, or try to manage to get that book and try to go through the chapter of a chemical bonds, it will give you a very better understanding, and rather we are just learning the almost similar things but more mathematical models and to try to calculate their constants and the energy level and so on, so which you had not learned in those days but we will be learning in this years. Okay, so let us start with the most strongest bond, that is the ionic bond. Ionic bond is the very firstly mentioned bond in a category of a primary bond. प्राइमरी बॉन्ड में सबसे ऊपर का नाम आयनिक बॉन्ड, माने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आपको पता है इट इज़ द रिक्वायरमेंट कंडीशन टू फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड इज a transition of an electron from one atom to the another atom, right? So it is something like a give and take relation of the electron or the valence electron from the adjoining atoms, and this will leads to forming a bond of a ionic bond. Ionic bond is also known as heteropolar bonds. It is the simplest type of the chemical bond. At the same time, it is electrostatic in nature. At the same time, it is the most strongest bond. The forms between the electronegative and electropositive. The forms between the electronegative and the positive elements of the periodic table. जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैलाइड ग्रुप्स और अल्कलाइन ग्रुप्स के बीच में जनरली ये बॉन्ड ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है. द वेरी वेल नोन एग्जांपल्स आर द ZnCl, sodium chloride, manganese oxides and so on. The most common and you had learned, which is already in your 11th and 12th grade, that is the sodium chloride. So we will discussing the entire story of a ionic bond with a reference of NaCl, right? Let us take the entire discussion with a core discussion by keeping the
material NaCl as a focus. NaCl is a stable equilibrium by losing or gaining electrons in order to stabilize their outer shell, right? So valence shell को stabilize करने के लिए either gaining or losing a one electron, this bond is going to be formed, right? In general, the octet will be formed, fulfilled, right? Let us pick it up an example of Na and the Cl material. तो मैं एक नेचुरली अवेलेबल सोडियम मटेरियल है, मेरे पास नेचुरली अवेलेबल क्लोरीन मटेरियल है, तो उसको मुझे अगर उसका आयनिक बॉन्ड बनाना है, सो नेचुरली आई नीड टू हैव द सोडियम आयन एंड द क्लोरीन आयन, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मेशन होगा, राइट? तो माय फर्स्ट जॉब इज टू मेक देम आयन फ्रॉम देयर न्यूट्रल स्टेट. अगर ध्यान से याद कर लें हम, तो सोडियम है वो लंप मटेरियल में हमें मिलेगा. आपने सोडियम तो देखा ही होगा लेबोरेटरी में. एंड क्लोरीन इज अवेलेबल इन द गैसियस स्टेट, राइट? ऑन एन एवरेज इट इज ऑलवेज अवेलेबल विद द मोलिकुलर स्टेट लाइक अ Cl2. और यहाँ पे तो बहुत सारा सोडियम मटेरियल होगा, जैसे कि पीस ऑफ आयन है, उसमें से मैं एक आयन का आइटम दूर करने की बात करूँ, ऐसे यू हैविंग अ लंप ऑफ अ सोडियम मटेरियल और उसमें से आप एक एटम दूर करो. एक एटम दूर करने के बाद उसका आउटर शेल इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो वो हो जाएगा सोडियम आयन. सिमिलरली गैसियस मॉलिक्यूल में से एक Cl एटम रिमूव करके उसमें एक इलेक्ट्रॉन अंदर डाल दो, तो वो हो जाएगा नेगेटिव आयन. So you having a anion and cation, that is a sodium and chlorine respectively. Now this will make a permanent chemical bond because they are electrostatic in nature. One is a positive ion, one is a negative ion, and their octet are stable, complete, and therefore they are said to be a stable. So आप ये भी आर्ग्यूड कर सकते हैं कि एक Na एटम और एक क्लोरीन एटम की स्टेबिलिटी विच इज़ लेसर दैन द सोडियम आयन एंड द क्लोरीन आयन, क्योंकि ये दोनों में ऑक्टेट फुलफिल्ड है. अगर फुलफिल्ड ऑक्टेट है तो दे आर कंसिडर टू बी अ मोर स्टेबल. एम आई राइट? एंड दैट विल लीड टू give us a path to formation for the NaCl ionic bond in between sodium ion and the chlorine ion, and this will lead to form the sodium molecule, sodium chloride molecule. Correct? अगर यही बात को मैं स्टोक्योमेट्रिक रिलेशन में लिखूँ तो आपके पास Cl2 एटम मोलिक्यूल था. अभी हमने बात बताया कि इन जनरल हाउ द Cl2 chlorine is available in the nature, it is available with the chlorine gas or the Cl2, right? I do have a Na, but just to maintain the stoichiometry I need to multiply by 2 with the Na. So 2Na plus Cl2 makes twice of Na plus ion and twice of Cl minus ion, and this will lead to give me a twice of NaCl. This is a stoichiometry relation. I think this is also you have come across to understand this stoichiometry of relation, chemical relation of in 11th and 12th grade level. Okay, with further discussion let us try to understand how exactly ये जो क्रिया बनी, माने ये जो घटना घटी, whatever it is happening between a formation of a sodium ion from a neutral sodium atom and chlorine ion from a neutral chlorine atom, and then you try to bring it both the ions to closer to a equilibrium position, and that will lead to a formation of energy. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल 3 में एनर्जी वेरिएशंस की लिस्ट दी गई है. ओके, और इसमें दो पार्ट बनाए हैं. एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, माने वाइल NaCl इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, what are the points where you can think about the absorption of energy, and these are the points in a right hand side column that the energy released during a formation of NaCl. So the very first one, that is a separation of a chlorine atom
from a diatomic chlorine molecule. Just we had discussed कि जहाँ तक क्लोरीन का बात है, क्लोरीन Cl2 मोलिक्यूल में ही मिल रहा है, तो उसमें से मुझे एक क्लोरीन एटम को अलग करना पड़ेगा. दैट मीन्स आई नीड टू वर्क ऑन दैट सिस्टम. Cl2 मोलिक्यूल सिस्टम पे काम करना पड़ेगा आपको, उस पर एनर्जी लगानी पड़ेगी, एंड यू हैव टू सेपरेट वन एटम. सो इट इज़ अ एनर्जी एब्सॉर्ब. एंड ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें NaCl बना है. दैट्स वाई इट्स कम अंडर दिस बैनर, एनर्जी एब्सॉर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl. दूसरी बात हमने क्या पॉइंट आउट की, सेपरेशन ऑफ अ सोडियम एटम फ्रॉम अ सॉलिड सोडियम. इनिशियली मैंने जस्ट आपको रिमाइंड किया था कि हमारे पास एक लंपी मटेरियल होगा सोडियम, और उसमें से मुझे एक एटम चुन के निकालना. देन अगेन आई नीड टू वर्क ऑन द सिस्टम. फ्रॉम द सोडियम एज अ रॉ मटेरियल आई हैव टू पिक अप एन एटम. तो मुझे एक सोडियम फॉर्म्ड मटेरियल में से एक एटम निकालना है. सो आई हैव टू वर्क ऑन इट. सो एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द NaCl formation. The third point I can point it out, that is a separation of a electron from sodium atom. फिर मैंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम की आउटर शेल में से मैं निकाल रहा हूँ. Again I need to do a work on the system, so the energy is ultimately absorbed during the formation of NaCl. Got it? With this, let us go to the right hand side of the block. Energy released during the formation of NaCl. कहाँ पे पहला पॉइंट आ रहा है? पहला पॉइंट ये आ रहा है कि कंप्लीशन ऑफ अ एम शेल ऑफ अ क्लोरीन. क्लोरीन की जो वैलेंस शेल थी, व्हाट इज अ एम शेल? N, L, N एंड M, राइट. थर्ड शेल ऑर्बिट में क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में. तो जो सोडियम इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन आपने अलग निकाला, वो आप एम शेल में डाइवर्ट कर रहे हो. तो दैट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग हियर, माने उसके 7 इलेक्ट्रॉन में से अब उसकी ऑक्टेट फुलफिल हो गई, माने वो हाइपर एनर्जाइज मेटे थोड़ा नीचे आ गया. इट बिकम मोर स्टेबल बिकॉज दैट क्लोरीन आयन हैविंग, मैं वर्ड बोल रहा हूँ क्लोरीन आयन. क्लोरीन एटम को 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन आयन को 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. दैट मीन्स बाय एडिंग अ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इनटू द क्लोरीन एटम, यू आर मेकिंग अ सोडियम आयन एज वेल एज क्लोरीन आयन. तो क्लोरीन आयन की ऑक्टेट शेल आपने कंप्लीट की, तो क्लोरीन आयन बिकम मोर स्टेबल, तो इट विल रिलीज a certain amount of energy. The last point, that is a lattice energy. And lattice energy, that means when such two ions are, you bring it them to their equilibrium position, that is a R0, जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, राइट. सो बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी जहाँ पे है, वो सिचुएशन, दैट डिस्टेंस व्हेन यू ब्रिंग इट ऑल द एटम्स, माने बहुत सारे 1 किलो ऑफ एटम्स को आप लेटिस पॉइंट पे, लेटिस अरेंजमेंट पे एडजस्ट करते हो, उस वक्त रिलीज होने वाली एनर्जी को लेटिस एनर्जी बोलते हैं. व्हेन यू ब्रिंग इट ऑल द एटम्स टू देयर लेटिस पॉइंट्स, एट दैट टाइम द एनर्जी दैट रिलीज, that is called the lattice energy. Am I clear with this? Very good. So the next point, the whatever you had discussed in tabular form, the same thing now we wish to put it into the equilibrium condition with a notation of a equation, so that it become a more understandable, and it is a art of understanding of a equation. सो सोडियम मटेरियल था, लंप मटेरियल था, एज अ होल सोडियम रो मटेरियल में से आपने, यू आर वर्किंग ऑन इट एंड यू आर अप्लाइंग सर्टन एनर्जी ऑन इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी यू आर एबल टू मेक अ 1 सोडियम एटम, एंड देन यू रिमूविंग अ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ इट, so you are applying a certain energy on it. So the electron affinity of a chlorine, that is a 3.6. This is the second story. सो आपने 5.8 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सोडियम पे काम किया, एंड यू आर एबल टू गेट अ सोडियम आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी possessed by a chlorine atom, and then you are giving them 1 electron. Because of that,
it become more stable and it is releasing a certain energy. यहाँ पे वाली right hand side पे वाली story, completion of a M shell, उसकी octet complete हुई. It is able by adding a one electron your lead chlorine atom in a more stable state, that is a octet fulfilled state, and that's why it releases the energy, that is 3.6, right? So 5.1 electron volt is the energy which is needed to convert the one atom separation of a sodium plus releasing of a one electron from the sodium and making a sodium ion. Chlorine atom में एक electron, because chlorine has a good affinity of electron and you are making them completion of their octet shell, so 3.6 electron volt get released. If you look at here, it is left side of equation. If you look at this n circle, then it's the right side of equation, respectively the sodium equation and the chlorine equation. That means अगर इसको मैं पॉजिटिव गिनूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो इसको नेगेटिव गिनना पड़ेगा. एंड देयरफॉर आई एम डूइंग द एल्जेब्रिक सम, व्हाट इज द नेट मूवमेंट ऑफ एनर्जी, कुल कितनी एनर्जी खर्च हुई, कहीं पे रिलीज हो रहा है, कहीं पे देना पड़ता है. सो नेट एनर्जी ट्रांजिशन इज 1.5. 5.1 you had applied, you gain back the energy, that is 3.6 electron volts, and therefore net transformation of energy is actually 1.5 electron volt. You can say the word you had spent on creating a positive and negative sodium ions and the chlorine ion, or the positive negative ions of the chlorine and sodium and chlorine respectively. तो लास्ट इक्वेशन में ये लिख सकता हूँ कि सोडियम मटेरियल था मेरे पास, क्लोरीन मटेरियल था, नेट एनर्जी की पॉजिटिव आया ना, ये डिफरेंस पॉजिटिव आया, सो इट शुड बी ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड. सो आई एम राइटिंग हियर 1.5 इलेक्ट्रॉन मैंने सप्लाई किया, and at eventually I may have the relation of a sodium ion as well as the chlorine ion. Am I clear? Okay, very good. Let's go to the next point. The same story but in a pictorial form with a more understanding and just again remembering the terms what we have seen now. So you have three pictures, figure A, figure B, and the last one is the figure C. The figure A says that you have a sodium atom, that means there is a sodium atom that is 1s2, so first orbit में 2 electron, 2s6, 2p6, so px, py, pz, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, and 2s, so 2s and 2p is giving us this 6 electron. So orbit की बात करो तो 2s as well as the 2p. शेल की बात करें तो दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल. एम शेल में हमने दो ऑर्बिट है, 2p and 2s. This is 1s, this is 2s 2p, and this is 3s 1. So the last valence shell having a 1 electron volt. That I am transiting from a sodium atom to and adding to the chlorine atom. So situation क्या हो जाएगी, that is shown in the equation B. They are quite separated. This is sodium atom, now releasing a 1 electron, so become a sodium ion. So यहाँ पे देखिए sodium ion लिखा है, और यहाँ पे 1 2 और 3 शेल थी, L M और N, उसकी जगह L और M दो ही शेल हो गई, राइट. एंड 2s and 2s 2p माने 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गई. सोडियम आयन इज मोर स्टेबल देन अ न्यूट्रल सोडियम एटम. सेम वे क्लोरीन एटम is unstable because of lacking of a 1 electron or incompletion of the octet. Now you add 1 electron from the sodium and therefore octet is completed, so it become more stable. So Cl ion is a more stable. Now you bring it them close to the equilibrium distance. This is R, that is more distance. This is R0. Outer shells are quasi in a close proximity, quasi close to each other. Close proximity माने काफ़ी नज़दीक, एक दूसरे को छू गए, इतनी नज़दीक. तो that distance which is the equilibrium space. Sodium
क्लोराइड मोलिक्यूल में दैट डिस्टेंस इज 0.24 नैनोमीटर। आप जरा सोच सकते हो कि कितना स्मॉलर डिस्टेंस है। 1 नैनोमीटर दैट इज 10⁻⁹, वो इससे भी 1/3 है या तो लेसर देन 1/3। सो it is very close to each other, and that is the equilibrium distance for the formation of a sodium chloride molecule. At this position the potential energy will be minimum, क्योंकि वो आपको उसका स्टैंडर्ड कर्व याद करना पड़ेगा। y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, x एक्सिस पे इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिपल्सिव एनर्जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में एट्रैक्टिव एनर्जी, और नेट एनर्जी का कर्व है वो डीप जाएगा नीचे, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। द एनर्जी रिलीज द फॉर्मेशन ऑफ द NaCl मोलिक्यूल इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी और द बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन ये बॉन्ड एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में फ़र्क इतना ही है कि बॉन्ड एनर्जी माने आप एक Na आयन और एक Cl आयन के लिए जो बात कर रहे हो, लेकिन जब मैं ये बोल लूँ कि 1 किलो मोल मटीरियल और सब्सटेंस के लिए फॉर्मेशन ऑफ द 1 किलो मोल सब्सटेंस, then that energy is referred as the binding energy, and other common word is the cohesive energy. So dear friend, please remember this, and with this I stop here and just go through this, and now we will after the next lecture we will be having another set of few equations for the chemical bonds of a ionic bond, and then we will start few examples. Stay home, stay safe.